AI is evolving fast. Are you ready? Meet AI at Flightbase, your weekly hub to learn, upskill, and stay ahead in AI world. Let's dive into today's session. Mastering dev tools and AI-driven design systems. Super agents probably soon will replace most of the software 1.2 products that we had, especially ERP से related वगैरह. अभी अगर आप देखोगे तो मतलब with these super agents you can go and create your own custom ERP. मतलब वो sheet समझते हैं, वो slide समझते हैं, वो customers को समझते हैं, वो सारा memory समझते हैं. ERP के जितने आपने आज तक फीचर रिक्वेस्ट डाले होंगे कोई ERP सॉफ्टवेयर के लिए कि भाई मुझे ये दो वो सारा समझ के खुद से आपको करके दे देगा. In such time it is very important to look at what is state of the art कि लोग कहाँ पे जा रहे हैं. एंड एआई की वजह से डोंट थिंक कि बस सॉफ्टवेयर फास्ट बनेगा और हो जाएगा. दैट्स नॉट द गेम. वो तो स्टेप 1 है, मतलब वो पिछले साल की स्टेप 1 थी. अभी इस साल में इस मोमेंट पे हर किसी का फोकस यहाँ पे है कि कैसे हम लिविंग सॉफ्टवेयर बनाए, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो कस्टमर के पास जाएगा, जब वो कस्टमर यूज करेगा तो उनके यूज के हिसाब से वो खुद को शेप करेगा. अगर वो कस्टमर मतलब अभी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब कल एसआर भी मुझे दिखा रहे थे, उन्होंने कुछ तो प्लॉट को प्रॉम्प्ट डाला, उसने सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या किया कि मैं बैठ के यूजर मुझे यूज कैसे कर रहा है वो सब देखूंगा और उसके हिसाब से खुद को मॉडिफाई करूंगा इन कोड. तो बेसिकली अगर सोचो कि वो 30-70 क्या बोलते हैं सर, I mean, one of the example was on resizable panels. So we have resizable panels in our dashboard, and then it would understand that on an average, अगर by default that code is 20-80 ratio, 20% and 80% ratio में screen को वो panel divide कर रहा है, but typically say users prefer the other way around or say 50-50 or whatever, then it would learn from it and do that. But that was a very small example. There was one more that we have a lot of say gallery, as in gallery as in media. So we load a lot of different media images and videos that we capture from drone for the user, and then it kind of created the entire flow wherein it would understand that there is a lot of lag in UX for the user कि बहुत टाइम लग रहा है वो पूरा पेज रेंडर होने में because वो मीडिया बहुत ही हैवी है. तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, and that is something that it is kind of understanding it agentically and then that's crazy. तो एसआर ने कुछ तो मजाक में दिया, वो बैठ के बोल रहा है मैं सारा यूआई मतलब यूजुअली यू हैव सिस्टम्स फॉर दैट राइट. आप बैठ के वो कहीं पे पूरा प्रोडक्ट एनालिटिक्स का ट्रैकिंग करते हो, यूजर कहाँ जा रहे हैं, क्या क्लिक कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट मैनेजर्स और डिजाइनर्स बैठ के सब काम करते हैं. बट सर्वे ने कहीं तो उसे बोल दिया और वो बोला कि मैं अपने कोड में ही कर लूंगा, तुम्हें ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बैठ के फ्रंट एंड के कोड में ही सब मॉनिटर कर लूंगा, मुझे पता है क्या करना है. एंड उसने पूरा बना दिया वैसा. तो आई थिंक मतलब वी विल ऑफ कोर्स गो इनटू लॉट ऑफ टेक ऑन हैंड्स ऑन ये सब कैसे करना है, बट सम फूड फॉर थॉट्स की कंटिन्यूसली ये सोचना कि व्हाट इज वर्थ बिल्डिंग इन दिस टुडेज एरा. जो सॉफ्टवेयर 1.2 प्रोडक्ट्स पिछले साल हम जो बना रहे थे वो चीज़ें आज बनाना टोटली वर्थ नहीं है. मतलब दोज एज अ प्रोडक्ट मतलब बनाना अभी वर्थ नहीं है बिकॉज समबडी एल्स विल डू इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. मतलब अभी जैसे फोटोशॉप हैज अ बिग एम्पायर राइट, एंड देन केम मिड जर्नी. अभी मिड जर्नी और ये सब लोग आ गए. मतलब देखोगे मिड जर्नी में कितने फीचर्स है कंपेयर टू फोटोशॉप, कुछ भी नहीं है. Everybody is aware of Midjourney. जिसमें इमेजेस तैयार कर सकते हो राइट. मिड जर्नी या चलो Runway. ओपन वे, हाँ ये ओपन एआई के भी मॉडल्स के साथ बैठ के जो लोग तैयार कर रहे हैं. तो फोटोशॉप का भी पर्पस वही था ग्राफिक वाला, और इसके लिए भी इसका भी मतलब सेम मार्केटिंग टीम्स यूज्ड टू यूज फोटोशॉप, और अभी वो मिड जर्नी और ये सब कर करके फटाफट आगे बढ़ रहे हैं. तो फोटोशॉप इवन डिडंट रियलाइज व्हाट केम आफ्टर दैट. ऐसा नहीं था कि फोटोशॉप का कॉम्पिटिटर. सो आई एम जस्ट यूजिंग फोटोशॉप एज एन एनालॉजी फॉर सॉफ्टवेयर 1.2 प्रोडक्ट फ्रॉम पास्ट एरा. फोटोशॉप को लगता कि कोई कंपनी आएगी मेरे से फास्ट कैसे डेवलप करेगी दिखाओ, क्योंकि मेरे इसमें इतने मेनूज है, कम से कम 10,000 मेनूज होंगे फोटोशॉप के अंदर में, बटन्स होंगे कहीं ना कहीं अंदर जाके उन्हें इतना बनाने के लिए तो किसी को एआई के साथ भी टाइम लगेगा. बट वो बनाना ही नहीं पड़ा. मिडजर्नी डजंट हैव दोज मेनी ऑप्शंस. इट केम इन अ वेरी डिफरेंट वे. वैसे ही आज का जो सॉफ्टवेयर है और जो कल का सॉफ्टवेयर होगा इट विल बी वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट कैन डू, एंड उसको कैसे इवन आर्किटेक्ट किया जाएगा. तो आई थिंक मतलब अभी वो सोच पाने के लिए सबसे पहली स्टेप है कि जो आज कर रहे हैं वो सबसे पहले एआई से करना सीखो, क्योंकि उसकी वजह से देन वील अंडरस्टैंड हाउ एआई वर्क्स एंड लाइक कैसे उसके अपना मेंटल मॉडल बनाना है. वी कैन शेयर आवर मेंटल मॉडल्स बट दैट हेल्प्स ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. You have to experiment yourself and build those mental models in time, and like you have to do it across your team. मतलब अकेले भी करके नहीं होगा.
and then you will be able to realize कि चलो what is worth building now, and then how do we architect वाला question तो AI बता ही देगा. Now see today in today's era the question is not how to build, वो question AI ही बता देता है उसका आंसर. सारा क्वेश्चन है कि आज आपको बनाना क्या है. That is the real question. मतलब once you get to it you will realize कि सारा क्वेश्चन वही है कि भाई बनाना क्या है वो सोचो. क्या बड़ा बना सकते हैं, क्या बड़ा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आज पिछले साल हमें मजाक लगता कि 100 सालों में भी नहीं बन सकता है. ऐसी चीज श्योर 100 सालों में नहीं बन सकता था, वही चीजें जो आज बनानी चाहिए. एंड देन AI will help you, मतलब of course we'll see through that. Hello guys, I'm Abhay. I work as a principal engineer over here in software, and this is Amol. Hi guys, I'm Amol. I also work with Abhay with the development team here. So in this session, let's get started. I hope everybody settled in. Alright. So while SRV set the context for today and how AI and in general lot of coding models and tools built around it are shaping and kind of transforming the way we are writing code in brownfield as well as greenfield projects. So we'll take examples of both of them and also see kind of the workflow that we kind of internally follow and how we are able to generate code at a pace that is much better. Kind of it's around, I would say, more than 10x, close to, I would even say 100x than what we used to do before all of these tools became available. So firstly, I think even in the break, I got a few questions around how to ground AI. Like when you are working, especially on brownfield projects where you already have a lot of code base that exists, what kind of transformation needs to happen so that now AI can work on that code base and actually give you that acceleration. So first, let's take that up and how we are doing that at Flightbase. Okay. We had a lot of talk around like greenfield and brownfield projects. Let's start with the brownfield one first. So these are nothing but just like our services. We have like 32 services running in our production right now. We do not include any HAL over here. HAL is like our hardware abstraction layer. So we are kind of trying to fly it on with software. Not trying, we are flying with software. So let's come to the grounding part. So we all know or have seen like we have a cloud.md or we usually have llm.md in every kind of project. So let me find that one. I don't think so. I have the wrong repo. Yeah, I was working on this one. So what we usually do is we have a entry point cloud.md, and whatever you want to actually tell to Claude is written over here. Like how to run your code, what workflows do you want, or why are you actually building this repo out. What else you can do is for each and every service or even the front end or back end, you can just go ahead and define a cloud.md over there, but that will actually bloat up the token usage, to be honest. So you have a 200,000 token context window for Claude, but that is usually filled very fast because this guy runs a lot of things in the background. So what we usually do is we have the docs to examine. We have a standard kind of a document to say these are the things you need to follow, and there are like other libraries and other things that we have kind of made separately because they were like quite large, so we use 3D maps, that's why. So focus area and analyzing context, how they should work with it, and working with documents. These are like the major things that we have put up into. And if you come above, this is actually a documentation part, not the actual code, to be honest. So this is like a huge ass documentation. So, like just to share high-level structure of how this entire documentation setup takes place. So, we start with what is common documents. These are irrespective of any feature that you are building in the code base. Like, what are your coding best practices? What are your naming conventions? So, even something very basic as, let's say, what kind of naming convention to follow for variables. Even those things are clearly defined in one of these documents, and this is what Claude Code will essentially look at in every fresh session to understand, okay, what are the principles that this team is following when it comes to either framework or basic language
best practices, so on and so forth, so that it is able to generate code that fits with the uh, established patterns of this code base. So that is one layer of documentation. Then there is another layer of documentation which starts with, which is for each and every feature that you build. So for every service, every kind of UI page that we have those kind of documents which describe, okay, what this feature is, so that the LLM has context of a high level distilled version of the PRD of that feature. Then what is the ADR of that? What architectural choices have been made to develop this feature? What is the testing document for it? That also gives it idea about, okay, what are the corner cases that I need to consider when programming? What are the unit test documents? So those, like a complete list of documents around all of these aspects just for feature developers. So that is for every feature that you have. And then that along with the common documents, and then there are documents around how to run this, how to test this. So that is how we structure our entire knowledge base of how you kind of run, how you deploy, how you build code in the manner that is needed for this repo. So we How can do you generate these documents? So all of these documents, it starts with, so for, let's say for a feature document, it starts with a PRD, and then you just jam with AI and have AI generate all of these documents itself. So you have a few primer documents that you give it along with the PRD, and then it will itself think and figure out, okay, based on this PRD, these would be the test cases, this would be the ADR, and you review it at that stage. So every time an architecture document is generated or a testing doc is generated, you review it at that stage. AI will often add code snippets of important pieces that it considers for that feature. So those get added to the documents as well. Like here you can see probably it has realized that, okay, subscription manager needs to have this kind of a schema and few patterns on how to subscribe or unsubscribe from a particular topic on socket. So it has added that in the document itself. So that, yes. Just a quick question. To generate those documents, would you use the same Claude model, or is it okay if we use, say, any other AI tool to generate documents? What does it work? So most often for like simpler documents, we just do it with Claude itself. Otherwise, if you're generating a whole bunch, I personally move into Grok or kind of move into even GPT 4.1 models like those. What's related on this? I would add to this, like, depends upon what the outcome do you want. Like 8 months ago, we didn't know what ADR was. Does everybody knows what ADR is? It's architecture decision records. Yeah. So 8 months ago, we didn't know about these kind of things. But once we started with this thing and kind of started iteration with Claude and other products, what Claude does it starts making index.html for each and everything. But if you want a decisions to be made, if you want to talk it out, initially it was DeepSeek. Right now, Grok is actually performing a lot better in these kind of tasks. So every time you tell him something, you tell him to do a record of why those decisions are. Yeah, so if somebody has, like, yesterday Dheeraj had a session on context. So I start with a project in Grok with the PRD and everything. So context is really important. I usually don't put out the whole PRD thing. I just give out 2-3 summaries, and my project files gets on creating as on I'm actually trying to decide on what to build. So architecture is something that I have 2 to 3 docs which are usually imported by me for each and every decision, because that has all the picture on what our system does and what kind of things have been built previously. But right now what we are trying to build is usually a smaller bit so that we can iterate on it, and they does not have a kind of a leaning toward what I have said initially. So thoda chota hai. So just on that point itself, so this entire doc structure, so there are different aspects of documents in this doc structure. So one of them is like this basic PRDs are kind of mentioned over here. Actually, I'm sorry, I should have pushed my latest docs. So there are a lot more newer versions in my docs. So basically, this asset management feature is something that I am working on. So I'm sorry. So, but still, I'll share the things that which are not here. But so overall, the idea is like the basic PRDs are generated by Claude or Grok or any other LLM,
and you kind of copy paste all of those doc files over here. A lot of those ADRs and other higher level architecture choices, you can do it. It doesn't necessarily need to be done in Claude, it could be done in any other LLM. But once you start getting into the implementation aspect of it, so this entire architecture now has a lot of rich context about what already exists in the current code base. And a lot of it comes from either 001 common, or I can also give references from, say, drone state is another feature that we built, or fleet view, or socket, or any other similar. So I can give it that this is a design pattern that you can kind of replicate. So it takes the context of PRD and then converts it and generates all of this architecture document. What it again also does is that generates these features. So these are individual. So asset management is not actually a feature, it's a complete dashboard. It's a complete product, I would say, a product line. And that product in itself has a lot of different features. So now, say for example, I want to show asset lists. So what is an asset at a very high level? Of course, Abhay will give a very brief demo as well. But asset is basically, because we are flying drones to capture images, right? Images of what? Images of assets. So typically the asset could be a tower, it could be a building, or it could be anything. So the idea is that this dashboard allows user to kind of import their assets and do operations on top of it. So that's the high level idea. But then this entire documentation has clear, so this asset list has an action bar. So then what this action bar has, it has overview, it has filter buttons, group by, search, sort, and then internally it has clear listing of what it expects to be done inside that document. Similarly, this document structure, so these are all the feature lists. I'll go into interfaces. So this also has clear interfaces. So all the API contracts has already been defined. That what will be the endpoints, what is the authentication authorization structure. So this is the endpoint that it needs to call. If it's a get, it's a post. What is the request response sort of a payload? All of it is already defined over here. Similarly, internal interfaces. So GeoPoint is an interface for demarcating a point, and so on and so forth. So all these interfaces has already been defined over here, and these interfaces get referenced while building these documents. So all at the end of the day, what it does, it gives you a very clear idea of what it is going to build. All you have to do is, of course, you have to review it thoroughly, line by line. You have to go through each of these interfaces and ensure that whatever information that you really want to capture, has it captured or not. As long as you do a good job in interfacing, in designing your stores, in designing your API schemas, and ensuring that whatever has been captured in the architecture and implementation document, rest assured you pass on all of this to your AI piece by piece, and it will be able to generate at least 90% of your code in kind of one shot sort of a manner, and rest 10% can be done in an iterative way. One question. So to start with, are you fed a PRD for it to work, or just a PRD to work, and then it kind of created the ADR and then the interface and everything, right? So the one who is going to start from the scratch doesn't know coding, let's say. What is a path you say that in cloud you can use? Okay. So what SRP is showing is for pros. Right. Pros of not AI. Pros जो पहले थे, Right. जिनको कोडिंग पे पहले प्रो थे, उनको सब पता है आर्किटेक्चर कैसे बनाना है, इंटरफेसेस कैसे बनाने हैं, DB का स्कीमा कैसे बनाना है वगैरह वगैरह. For those people this is super power. Right. Right? जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको AI को पूछना चाहिए सबसे पहले कि भाई मैं क्या करूँ बता. And instead of Claude code, maybe what SRP is doing is a massive project. Right. This will grow into 10
आई थिंक several hundreds of thousands of lines. तो वो सारी चीजें करना आज थोड़ा क्लाउड वगैरह के साथ में यू विल गेट इनटू सर्कल्स एंड वो आपको घुमाएगा कुछ तो होगा एंड प्रोबब्ली यू विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. रादर टूल्स लाइक लवेबल एक्सेट्रा जो आपको कुछ डेफिनेट चीजें करने देते हैं एक लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर तक की आप चीजें बना सकते हो. आई थिंक दैट विल बी योर बेस्ट बेट इफ यू आर नॉट अ एक्स कोडर. अभी आज जितना एआई का लेवल है उसके अंदर में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाना फॉर नॉन कोडर्स इज डिफिकल्ट. यू कैन डू इट, देयर इज नो डाउट. मतलब कुछ लोग वाइट कोड कर करके बहुत कुछ बना रहे हैं अमेजिंग चीजें, बट दे गेट स्टक समवेयर. स्पेशली अगर आपको प्रोडक्शन में शिफ्ट करना चाहते हो वगैरह पीओसी वगैरह तो आराम से बना सकते हो. स्मॉल टाइम एप्लीकेशन जिसमें कुछ डैशबोर्ड्स है कुछ हो रहा है वो तो बना लो, वो क्लाउड कोड को पूछ लो बना देगा. यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट सो मच. इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब चीजें वही कर पाएगा जिसको अभी मतलब सर ने जैसे बताया he has to go and read that ADR. अभी ADR रीड करने के लिए पहले आपने को पता होना चाहिए कि भाई ये होता क्या है इसमें. Question is different. I'm saying that starting point, right? And then it will lead to something, right? Then I understand these are very complex kind of a code needs to be done and then see the main part is review. ये आपको code करके देगा, but you need to review the code. You need to review the code, right? There has to be some kind of SOP which needs to be given to your, let's say, dev team, right? We are not saying that AI is going to replace the whole what you call human. There has to be a human in loop, right? But the roles has to be defined. What needs to be done at what level, right? And then that would lead to effectivity of or efficiency. So probably let's say somebody which is having a higher level, let's say CXO. I'm talking about a typical organization. Let's say a CXO is there. He has a complete idea about the business which is there, and he knows what he wants to build, right? So wherein he will, and he don't care whether he writes a code or not, right? What he is mainly required is how it can generate a business for me, right? So wherein he will use a AI tool and he will create something. So let's say he will create a PID for that matter. That would be the level he can go, and then he will pass it on that PID to probably a dev team. There will be a handshake, right? That is what my question Yes, is. yes. So one more. So I saw you showing action bar with a lot of components. Everything has a sort, filter has a MD file. I think, does it really need to be that descriptive? That is one. What is right and what is wrong in this? Question is, right, of course whatever is working is right. What can go wrong? That is one. And if I see that action bar component, everything on that bar needs an MD file, it's what I perceive. But let's imagine the whole page then, right? Do I need to have every button, every text box, every menu button needs to have a .md file separately? So Sorry. Next step होगा. So this entire asset list is a page, and you break down that page into asset bar. So as I was saying, this is not the latest one, so I'm sorry for that, guys. But asset list is a complete page. Inside that there is an asset bar, there is an asset panel, there is a map view, and then action bar has its own space. Similarly, there is a folder for asset panel, there is a folder for map view, and so on and so forth. And within that, you kind of generate those documents. It doesn't necessarily need to be dedicated MD files per se, per button. It kind of decided that, but if I open it, it's a very shallow sort of a document. It could as well have been one action bar.md, could have been fine. So that's not the, I would not say that takeaways ki har cheez ke liye chota chota MD banao. That is not required at all. I just didn't meddle with it the way I would say. But the important aspect is that at least action bar needs to have its document. Asset panel needs to have its document, that what needs to be captured. And the documentation is also about, so a couple of things that kind of here missing is A, user stories. So what I have observed that as far as you kind of capture user stories of that, even say asset list feature has its own user stories, that user will go to asset panel and click, and when the user clicks, user expects that a certain asset needs to be will be highlighted in the map.
this entire user journey, and similarly as verbose you go in kind of mapping this user journey, it is kind of able to understand all of that, and now it's able to generate your Redux stores, your UI stores, your queries, whatever that needs to be built to ensure that all those user stories are met. It will also help your QA agent, because now it knows that these are the workflows which are bare minimum, bare essential workflows that need to be kind of gone through. So the QA agent will also ensure that all these test cases are in place. Couple of other folders which I also have is learnings folder. So what the idea of that learnings folder is that as we progress, as I keep generating more and more code, I understand that okay, there are certain things which me and LLM, both of us forgot to jam when we were kind of generating all of these architecture documents. So there is a dedicated learnings folder for each and every mistakes that we committed, and all of those are documented. So now once they get documented and I move on from say asset list page to say an asset details page, so it's a dedicated page to, it's an exploded view of a particular asset and it has its own panels and whatever. But because of that dedicated learnings folder, now when I am kind of generating these documents, I can ask it to refer ki, listen boss, last time we made these mistakes, let's not commit the same mistakes again. And now the folder that has been generated for asset detail has a lot of better structuring in which which I kind of made mistakes on while generating asset list. I think that's that. And then a couple of other things that I've also found while creating this docs folder was brain dump in the sense within brain dump is on future ideas. So a lot of times while you would jam with AI, it would kind of spit out कि ये भी बना देंगे क्या, वो भी बना देंगे क्या, मतलब PRD में वो नहीं है, लेकिन it would be so enthusiastic kid कि चलो ये भी बना देते, वो भी बना देते. And in your first click you would be like, बात तो सही कर रहा है, ये PRD में नहीं है, लेकिन अभी इसको मैं बनाऊंगा, टाइम लगेगा, फीडबैक का वेट करते हैं. But you also don't want to let go of that idea. So you have a separate folder for brain dump / future ideas, and in that future ideas you kind of capture all of that, because LLM has mostly generated the entire quote unquote PRD of that feature जो चाहिए भी नहीं, लेकिन at least वो idea रह जाएगा, otherwise वापस से फिर कब मिलेगा idea किसको पता. And you can always then refer back to a week or two later and see कि हाँ ये जो future ideas था इसमें से फिर क्या क्या उठा सकता है. तो ये idea note कौन करता है? Sorry? Idea note कौन करता है? As in? Where does that? वो idea. Where is the backlog get captured? Yeah, the future ideas का. वो जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में एक फोल्डर है मेरा फ्यूचर आइडियाज के नाम से फोल्डर है, एंड फिर मैं LLM को बोलता हूँ कि ये तुमने बोला तो बहुत सही है लेकिन अभी मेरे को चाहिए नहीं, तो तुम क्या करो, ये फ्यूचर आइडियाज वाला जो फोल्डर है उसमें जाके ये वाला आइडिया का PRD बना के डाल दो. हाँ, वो बाकी का वो करता है. यहाँ पे ये जो पूरा डॉक्यूमेंट में एक भी लाइन आइटम मैंने नहीं लिखा है, मतलब एक भी वर्ड मैंने टच नहीं किया है, ये पूरे मार्कडाउन डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मैंने नहीं किया है. ऑल ऑफ इट इज डन बाय AI. एंड अगर मुझे मान लो एक मार्कडाउन डॉक्यूमेंट मुझे चेंजेस भी करने, मैं रिव्यू करता हूँ, मुझे दिखता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर इज कि मैं जाके फाइल में एडिट कर दूंगा. डोंट डू दैट, बिकॉज नाउ द AI डज नॉट हैव कॉन्टेक्स्ट कि ये चेंज क्यों किया, एंड देन द AI इज नॉट लर्निंग फ्रॉम यू कि why was that certain decision was taken. So it has to be by Claude during that chat session, चाहे वो शुरुआत में it would be painful कि इतना सब कुछ लिखना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं वहीं पे जाके चेंजेस कर लेता. तो you have to fight that and resist that kind of खुजली. AI relearn. WinSub knows that, right? WinSub prompts you saying that the file has been changed by you. Let me understand why did you change that. Every Claude does that, but it won't know कि अभी मैंने ये इंटरफेस में कुछ तो चेंज किया. If it is a small little एक वर्ड चेंज कर दिया, then that's a different story. But अगर मैंने ढंग का कुछ चेंज किया है, then उसको पता कैसे चलेगा कि वो चेंज, उसको ये पता चल जाएगा कि चेंज हो गया, but the reason behind that उसको नहीं पता. तो next time मैं अगर एक और कुछ बना रहा हूँ which is very similar to that, there is a very high probability कि वो वापस से गलत बनाएगा, and फिर आपको वापस से जाके उसको ठीक करना पड़ेगा, and then the cycle of frustration grows कि भाई ये तो हर बार गलत ही करता है, मेरे को ही जाके ठीक करना पड़ता है.
relearn AI करता काम है नहीं क्या? करता. हाँ, ये My question is related to this only. Does it Maybe- relearn? Relearn. आपने मिस्टेक तो कर लिया, right? Next time आपको फोल्डर में जाके उसको बताना नहीं क्यों पड़ रहा है. Why it doesn't relearn? तो because of context window, so it's like very like human like, right? अभी आप आज कुछ गलतियां कर रहे हो, कल एक्सपेक्ट करना क्या सही रहेगा कि कल से आप सारी गलतियां करना बंद कर दोगे, या आपने पिछले एक महीने में 5 गलतियां की है तो अगले एक महीने में आप 0 गलतियां करोगे, ऐसा नहीं होगा, राइट? यू विल फॉरगेट कि अच्छा ये गलती मैंने की भी थी. तो वेरी सिमिलर टू LLM, वो भूल जाता है, एंड वो ना भूले उसी के लिए ग्राउंडिंग का तरीका है. So, Sarve and Dheeraj, अभी तक you have been conducting this session since 6 months, right? So आज तो ये जो आप बता रहे हो मुझे मैजिक नहीं लग रहा है, पर आज का जो मैजिक धीरज ने इसके पहले बोला था कि how do you enable your customer or end user to create features, वो कहाँ है मैजिक? that I वो मैजिक जो you said कि how the software will do, ऐसा कुछ है क्या आज मैजिक के लिए? तो वो हम बना रहे हैं. तो अभी इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस. तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग उस डायरेक्शन में. तो इट ऑल स्टार्ट्स इन दैट डायरेक्शन ओनली. तो वैसा प्रोडक्ट इज मोर लाइक अ कॉन्सेप्ट. इट्स मोर फ्रॉम तो समथिंग लाइक दैट इज मोर ऑफ अ व्हाट क्वेश्चन, कि कैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए और कस्टमर उसमें क्या मांगेगा, लाइक व्हाट विल दे आस्क फॉर. इट्स अ मोर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग. उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है, वी आर यूजिंग द सेम थिंग. तो ये एक्सेलरेटेड लेवल पे हमें डेवलप करने में हेल्प करता है. तो सबसे पहले तो अभी मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर में द प्राइमरी थॉट प्रोसेस इज कि सबसे पहले एक अभी रिजिड वर्कफ्लो सर्वे ने बना दिया है, बिकॉज दैट इज बेसिक, क्योंकि उतना तो यूजर को चाहिए. बट उस रिजिड वर्कफ्लो के बियॉन्ड अभी यूजर चाहता है कि मैंने ये एसेट का इंस्पेक्शन किया, इसका रिपोर्ट तुम मेरे 2 लोगों को पहुंचा देना. यूजर ऐसा बोल रहा है एंड दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड हम बैठ के ईमेल भेजने वाला मॉड्यूल ऐड नहीं कर रहे हैं. वो सब उससे हो रहा है. वो बोलता है नहीं यार कल से मुझे एसएपी में चाहिए क्योंकि मेरे पास एसएपी है. तो वो सिस्टम जाकर के एसएपी का टूल यूज करके एसएपी में डाल पा रहा है विदाउट एनीबॉडी ऑफ फ्रॉम आवर डेवलपमेंट टीम गोइंग एंड डूइंग इट. आई थिंक दैट इज वर्जन 1 ऑफ और लेवल 1 ऑफ वैसे प्रोडक्ट जो खुद से जाकर के समझेंगे यूजर को क्या चाहिए और वैसे वर्कफ्लोज बना के देंगे. इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ वर्कफ्लोज, इट्स आल्सो गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ यूएक्स, कि आप उसको देखने के लिए उसे चाहिए कि मुझे यार तुम ये क्या इतना बड़ा टेबल दिखा रहे हो, इतने टेबल से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं इतना 100 लाइन थोड़ा पढ़ते बैठूंगा, तुम मुझे ग्राफ्स एंड चार्ट्स दिखा दो. तो वो समझ के ले रहा है अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए मैं यूआई जनरेट करके देता हूँ, इसमें तुम्हें इसी डेटा का ग्राफ एंड चार्ट दिख जाएगा. एंड अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्लॉड ही बैठे बैठे ऐसे 1-2 मिनट में डैशबोर्ड बना के देता है किसी भी चीज का. यू थ्रो डेटा, एक्सेल शीट उसके साथ भेजो, चैटजीपीटी पे करके देता है. हाउ डू यू ब्रिंग दैट इन योर प्रोडक्ट? मे बी दैट इज समथिंग. दोज आर सम डायरेक्शंस दैट यू कैन गो इनटू टू क्रिएट प्रोडक्ट्स जो यूजर को इमीडिएटली वैल्यू दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर दे आस्क, उनके लिए प्रोडक्ट जल्दी से बना के देता है. But today's session is not dedicated. Not about that. Theme of the today's session was not that. It was the theme of today's session is more on. Now you know what needs to be built in an agentic manner. Like expectation क्या user का workflow कैसा होने वाला है. But how do you build that? You still need some sort of a structure, so that you need to build these agentic pipelines, so that the LLM knows how to go through step by step and then generate code out of it. It's a good question. What I want to understand is this the structure that you've created for very specific module, module level instructions or the information that you have captured, and that is a good way to control context, also keep focus for the LLM. But in your workflows, I haven't used Cloud Code per se. I've used other like Gemini Code or Aider, for example. But either it's inbuilt, or if you could help explain how you control the passing of the context of whatever you have captured, like or whatever you have made Cloud Code capture also as part of your flow, so that it keeps the focus, keeps the context also like very much aligned with whatever you're trying to get out of it right now. So as part of what you're describing, you could just focus on maybe highlighting those parts that will help ground some of the working styles for us as well. So typically,
once these documents get created, once these documents get generated, and now you are in the implementation phase, right? So, I mean, if I understood the question well, typically what I would do is Claude Code or Cursor typically has the ability to kind of insert files into it. So you do @ and then, or you do drag and drop and then insert the folder into it. So you are like consciously making sure that when you are asking the next Yes. thing to do, you are referring to. Yes, it has to be done. That's on you, right? Yes, it has to be done by me because I know that okay, now I need to build an asset details. It can do that on its own, but then You want control, right? So you Yeah. want to make sure that you're passing. yeah. So there is an existing piece of software where this AI is not used. So how do you? There is an existing piece of software with more than 10,000, 20,000 lines of code folders. How do you bring this? Do you start from scratch, or you bring that software into Cursor and tell you Cursor to start generating the .mdv file? So basically, see those MD files SRV generated, he did it from PRD. PRD was source to capture कि हमें क्या बनाना है. Let's say you have code, but you can start reverse, right? ये code करता क्या है? बहुत से पढ़ और बता मुझे ये मॉड्यूल में क्या है. AI can do that. Like सबसे पहले जब start हुआ तो लोग वही काम के लिए यूज कर रहे थे. Code describe करो, right? अभी वो Git में डालने से पहले बताता है कि इसमें क्या change हुआ है. It can understand code. Ask it to go one by one. आपको भी पता है आपका कोड करता क्या है. तो गाइड इट कि भाई देखो मुझे पता है ये 5 मॉड्यूल है, अभी एक मॉड्यूल का बैठ के डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे. तो आस्क इट टू क्रिएट दैट डॉक्यूमेंटेशन. यू विल गेट टू द सेम स्टेज जहां पे उसके पास इनफ डॉक्यूमेंटेशन है. सी ऑल ऑफ दैट इज कॉन्टेक्स्ट. व्हाट एसआरवी इज सॉल्विंग इज लाइक कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एट अ वेरी हाई लेवल, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है. इसके अंदर में अगर वो हर एक मॉड्यूल बनाते टाइम पे कॉन्टेक्स्ट देंगे तो वो कुछ तो अच्छा करेगा, कुछ तो उधर खराब कर देगा. वो प्रॉब्लम हटाने के लिए एंड उस कॉन्टेक्स्ट स्केल पे देने के लिए ही इज जस्ट डंपिंग हिज एंटायर ब्रेन इनटू लाइक ये डॉक्यूमेंट में भर दिया मैंने, इसको फॉलो कर करके अपन बस करते रहेंगे. उसके बाद भी वो 10% इधर उधर जाएगा, वहां पे करेक्शन करना इजियर है. अदरवाइज आप इतने बड़े प्रोजेक्ट ऐसी सिमिलर इससे ये वाली या ऐसे सिमिलर स्ट्रेटेजी के बिना बना नहीं पाओगे. Like I would add something about Dheeraj said. तो हम लोगों को भी यही प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि ये 7 साल से चला आ रहा है रेपो. This is not something we have built in a year. तो अब ये क्या होता है? अब ये होता है कि हम लोग कुछ भी नई चीज आते हैं, so we upgrade things up and we leave out the legacy code as it is क्योंकि हमें changes नहीं करने हैं. तो the part where the documentation has something and your main code has something else, वो वाली चीजें सीधे 1-to-1 मैप नहीं होती हैं. तो उस पे यही करा गया है कि यूजर स्टोरीज पे ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डीप इनटू कोड कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है. दिस वे व्हेनेवर लाइक योर एलएलएम डज दिस थिंग कि उसे चेंज करना है कुछ, उसे बग रिजॉल्व करना है, सो ही हैज द कंटेक्स्ट ऑफ यूजर कि वो करना क्या चाहता है इंस्टेड ऑफ कि जस्ट फाइल्स में बस ये लिख सकते हैं कि ये फाइल है जो इस मॉड्यूल को रेफर करती है. डोंट गो टू डीप इनटू कि इसमें ये डिजाइन पैटर्न होना चाहिए या फिर ये आर्किटेक्चर, अगर मैं एंगुलर यूज कर रहा हूं तो ऑब्जर्वेबल की जगह सिग्नल होना चाहिए. डोंट गो इनटू दैट थिंग, अदरवाइज इट विल मेस अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. और फिर ग्राउंडिंग करने के लिए जैसे शुरू में पूछा था, वी हैव टू एक्चुअली गिव आउट व्हाट थिंग वी आर फोकसिंग ऑन, सो दिस थिंग डज नॉट डू एवरीथिंग. Also, like in these kind of project, which is kind of in between brownfield and greenfield, very important कि on this document level itself आप जितना review करोगे, जितना ये level correct करोगे, उतना कम code correct करने की जरूरत पड़ती है. If you don't correct on this level, जो भी 5-10% Claude will mess up and do it. Probably जो सर बता रहा था, few words need to change or few interfaces need to change. That has to be done on this level. If it is not done here, then वो load up, okay, on code you will have to change lot of things there. So like right now, lot of that role is also changing. कि अभी बहुत time जाता है to just review all of these documents one by one, not so much of कि final code अब बैठ के review करेंगे. Maybe let's move on because we have a lot of different hacks to share, and then we can again circle back and have a separate Q&A. Just one start. So whenever we develop an application, using like Cursor AI, so there are some general rules like code comments or things we wanted to have in overall process. Okay, and there are some things like model specific, feature specific. There will be MD files for that. So as in we have multiple features, and in the later phases we might come up with some change requests, right?
So we need to modify all the MD files that we have generated for all the features. So in those cases, as in if you are using cursor and these MD files are you are keeping into the repository, but there might be a possibility that we can create those in Confluence document in Jira or other project management tools, and then we can use MCP servers and to pass those details here. So how we currently are doing this? Okay, I'll quickly take that. So two parts to that question. Firstly, like जो आपने बताया, right? If you are iterating on a feature, we normally try as much as possible to have fresh documents for that update, so that AI has context of ठीक है पहले ये ऐसा बना था अब ये change करना है, and that history also remains for that feature. Like right now, let's say now we are looking at action bar, but if this action bar changes 1 month down the line, we'll probably have another section which shows what those changes are. So AI has the context of okay, it was built like this before, this is what is present. So kind of that version maintains for like major changes. For very smaller things, we kind of add it to the same version. Things like that can work. I think with MCP, the bigger problem is like Claude Code nowadays has started to have an internal RAG where it kind of indexes a lot of these documents. So if it is in code base, it is easier for it to refer using its RAG tool and fetch all of those contexts across different documents very quickly. With MCP, I don't really see a very big advantage unless there is something. Okay, I think let's move. Let's move. While this is connecting, but what I usually say is, if you keep multiple versions of something, this will only kind of counter your context. So I usually, with my features, don't keep multiple context of a single feature. So let's just start with a bit of Claude Code. So I have a few things running out that I ran just before. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. Okay. Can you guys read? Okay. So so today we I and Amuk are actually working on something which is like Greenfield right now. We are working on like Dheeraj was explaining just a bit earlier, and Sarvesh was actually working on something that we are showing today. So first problem came in was like I wasn't able to log in on this thing. So first of all, I just started with like the asset management project. Login page is giving me a blank screen. Check out how can we solve this. The server is running it for 500. So usually what happens is whenever you give this kind of context, your Claude Code might not be able to solve it, because this guy usually does is वो जाएगा सीधे कोड पढ़ेगा कि लॉगिन पेज है कि नहीं क्या है, और वो सीधे डीबग करने लग जाएगा अपार्ट फ्रॉम एनी कॉन्टेक्स्ट. सो हाउ डू यू सुपरचार्ज योर क्लॉड सच दैट कि ऐसे एक लाइन वाले प्रॉम्प्ट भी वो सही से सॉल्व कर पाए. सो उसने करा तो यही कि हाँ examine asset management app structure and locate login page. So this is what he does with my code. Second, अगर आप देखोगे तो ये generally चीजें नहीं करते हैं, which is check browser console for JavaScript errors. This is something which is a terminal environment. उसको मेरे browser का access कैसे मिल रहा है? First question is this. Second is verify the server is running. एक terminal में दूसरे terminal का access कैसे मिल रहा है? Checking routing configuration, बाकी code में आ गया, examine login rendering. So SRV was testing his things and he actually took out login page, so there was no login page in this app. This guy just built in. लेकिन how does he know कि भाई सारे चीजें कैसे मैं कर पा रहा हूँ और क्या कर पा रहा हूँ? After that, he was able to make the login page work and did everything correctly. This is a little bit smaller. And secondly, this example. So I was working on this Figma component. I have like the list of components that I have. So this is basically our asset management page that we have on Figma. So I just took out a component, get a link out of it, and just pasted it over here. और उसको बताया कि मैं जो build कर रहा था वो same नहीं दिख रहा है apart from that. So again, how do I get context from Figma?
This is what he is doing. He is able to actually just get through Figma, get everything done, and he's able to suggest me according to my tailwind, like what kind of components or things I need to change. So I haven't completed this. We will complete this in over here. And thirdly, it is with context of your whole browser. Right now, the browser was a tool that usually Claude was not able to actually access that much. But right now, if you want to do this thing, let's say inject a JavaScript into your browser and tell that guy that I just want to check it out first, and then we can implement it. So these type of flows are even possible right now with Claude. So how are these things working? These things are again working with MCPs only. There is no magic or such things. So first of all, what we are able to do with Claude is we are able to control Chrome by control Chrome or either by Chrome MCP stdio. You are able to get all the data. So has anybody used Dia browser? I think. So this guy can do each and everything that Dia does, but from terminal. So that is the way they can capture network logs. They can actually profile your thing for you. They can even give you the first rendering time too. Right now. Secondly, what we are able to do with this thing is, so let's say your terminal has something. So initially I used to use a web search MCP so that even if I am something getting or implementing something new, how does Claude has context for it? So initially I used to do web searches, but right now what we have done is we have shifted to Context 7. So this thing has about 8,000 or 9,000 libraries, documentation and everything into this. So, but one of the biggest problem with this Context 7 thing is nobody knows how this thing is working, and if you try to like generalize and find something, the whole context window fills up just by one MCP call. So you need to specify like I want to use this thing, fetch the documentation for this kind of feature for me. So these are the limitations around Context 7. And apart from that, we have Playwright. Playwright, if somebody is from QA, we are able to test it out from Claude only. So these are small workflows that we have been doing with Claude. So let me just get this thing done for now. Okay. So, so just for testing, what I did was I kind of took out the search bar from over here and did a kind of a UX kind of a thing, kind of change the design and everything. So we are not fully vibe coding as of right now, but that is something where we want to go, to be honest. So this is, meanwhile this is doing his stuff. So let me just put it in auto edit. I will show you something that we are building with fully vibe coding kind of a thing. So as sir asked us, like if somebody is new with coding, how does it do it? So like really easy answer is Replit, Lovable, there is Flaunt, Bolt, these kind of apps. So this is an app which was actually built by our design team, but being a developer, that kind of poked my ego. That's why I shifted this thing into our repo. So we are directly being able to copy Lovable components into our own dashboard. The thing is, this is something what we finished with. This is like working thing. I will not go into the functionality of this thing because this is planned for next session. So please do visit for that. But what does this is, we are able to create reports again and again. So we are able to kind of generate reports from AI, but just giving out one context and whatever observation we had in a flight or anything. So we are able to actually just migrate components from Lovable to our own dashboard now.
because we are able to give out tailwind config and whatever stylings we want to give out, and we have a component library. Let me show you that. Yeah. So we have a component library which is like quite extensive. So design system is something which was built by SRV location for your design. I think it's teaching more to office. Sorry. Yeah. So these are like the components that we have built from like ground up, and that's how we are able to actually migrate things from Lovable to our own app. So once this is done, let me just So this is again running on 4500 only. Initially we did not add a search bar. Claude put it up just by giving a reference to Figma. This thing is actually workable with small components as of right now. If you want to clutter 2-3 components, it might not give you that good of a result. But if you try to make a layout out of it and you had a single component in Figma itself which just focuses on the layout, this thing works out pretty well. So like kind of this Figma MCP is very powerful in terms of like before all of like around 6 months ago we used to face a lot of struggle and a lot of time in matching actually what is getting shipped to what was there in design, and that like UI used to be clunkier and कभी network responsive enough नहीं है तो screen छोटा हो गया तो अभी चीजें mess, things start getting into each other. So these kind of issues used to take place when we're like manually trying to match Figma in code. But now through Figma MCP, now Claude is actually able to get a very detailed JSON about what this exact component is with its styles, responsiveness, etc. Whatever has been configured in Figma. So a lot of these components, now this is exactly matching what was there in Figma. So in that way, even kind of quality of output, how we are able to make the UI look more cleaner, all of these things have been improved. You create a UI by yourself first? In Figma? In Figma you create a system was created manually and then So even there, what our designers normally do is they'll probably use Lovable and like do a lot of brainstorming with Grok, move it to Lovable, generate the UI there, and then different plugins which will take it out, put it into Figma for final edits, few kind of optimizations here and then that is needed. Okay, so one of the thing is like, to be honest, SRV and even Amog are backend developers. So sorry for like this type of dashboard, but this shows like the power of it. To be honest, like we have been trying to build design components and design system for past 3 years, but this year we kind of built 3 just because we had the power. To be honest. And apart from that, I think if you guys can summarize the next whatever items that are there because we are out of time, and then how much I time. think that is all we should cover right now. Go Chrome MCP. Chrome MCP. If we have like 5 minutes, we can call Saurav up for this thing. Saurav. So Saurav has been doing interesting things with Chrome MCP. So with that, what happens is Claude is able to directly read your network logs, look at what console errors are coming, look at whether any HTTP calls are failing. So essentially everything that happens almost in the inspect panel, how you debug, you look at the DOM and etc. All of that Claude can now do through this MCP. So we'll just see how Saurav is using that. While Saurav is coming, I have a we hack to share as well. So this was an older version of the dashboard. So but the latest version actually matches. So basically the Figma, what it also helps you is also so as Abhay mentioned, if you give the link to the entire page and expect that Claude will be able to generate the entire page in one go, that's not going to happen. But if you give the link to an entire page but ask it to kind of generate layouts out of it,
and identify. So say giving an example of asset details itself, page itself. So there is an action bar, there is a panel, this is map view, there is a side panel, there is a top bar, and so on and so forth. As long as you give the overall pages link and then individual components link in the same prompt and ask it to kind of visualize the entire layout, then it does a pretty good job in identifying where to put a certain asset, as in certain element within your code base or within your dashboard. Otherwise, if you just give a single component without the context of the layout, then it doesn't know where to put it. तो वो कहीं भी डाल सकता है, वहाँ पे कंट्रोल नहीं है, बट पहले लेआउट लेवल पे वो करोगे तो बहुत इट हेल्प्स मी अ लॉट इन ग्राउंडिंग. ठीक है, तो मैं हिंदी में बात करूँगा. किसी को नहीं समझ रहा है तो बाद में आ जाना समझाऊँ. ठीक है, इसमें समझाएगा. ट्रांसलेट दे दूंगा आपको कन्वर्ट करना. ठीक है, तो इंट्रो देता हूँ. मैं सौरभ हूँ, मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, बट मेरे को फ्रंट एंड कराते हैं. तो क्योंकि बाकी कोई करना नहीं चाहता तो मैं कर देता हूँ. बट हाँ, पहले मैं एंड्रॉयड करता था, अभी वेब में डाल दिया. तो मैं क्या दिखाने वाला हूँ इज़ वेरी सिंपल हैक. आप लोग अभी क्रोम से भी दिखाया मैंने, इनसे भी बता सकते हो. थैंक यू. तो मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, उनको नहीं पता होता, तो बेसलाइन सेट कर रहा हूँ. तो आप क्या कर सकते हो, क्रोम एमसीपी का एक बहुत सही पावर है. वो आपके ब्राउज़र को लिटरली, आप जैसे ब्राउज़र यूज़ करते हो राइट, कॉन्सोल फेच करते हो, नेटवर्क देखते हो, डॉम एनालाइज करते हो. इंसान यही तो सब करता है ना, जब कोड लिखते हो फिर जाके ये सब करते हो, फिर करेक्शन करते हो, वापस कोड लिखते हो, वापस बिल्ड करते हो. पूरा दिन निकल जाता है, नहीं होता टाइम इतना. फ्राइड बेस में बिल्कुल नहीं होता. तो आप क्या कर सकते हो, आप उल्टा कोडिंग मार सकते हो. बता दो कैसे. ये मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ड्रैगबल वीडियो फीड करके, गंदा दिख रहा है, बट दिस इज व्हाट आई ट्राई एंड मेक इन नेक्स्ट 5 मिनट्स. लाइव कोडिंग है, अगर नहीं हुआ तो माफ कर दो. ठीक है, ये मेरा लैपटॉप भी नहीं है तो सॉरी, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने भी बेसिक कुछ नहीं किया. ये मेरा तो बेसिकली मैंने क्या किया है, क्लाउड कोड चालू किया है. ठीक है, यहाँ पे ये मेरा रेपो है. ये कोड है जो मैंने लिखा है, बहुत गंदा है, मत करो. फिर कितनी माफी चाहिए. ठीक है, अभी मैं उसको क्या बोलूँगा कि मैं आपको एक बार लाइव डैशबोर्ड दिखा देता हूँ. तो ये अभी चल रहा है. ठीक है, ये डेवलपमेंट में चल रहा है. अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो ड्रैगबल फीड यहाँ पे ला पाऊँ. ठीक है, तो जब भी आप मेरे से बात करोगे ना, आपको सीधा नहीं बताना है मेरे को ये चाहिए, ऐसा नहीं बताना है. आपको इसको थोड़ा वो तरह एडल्ट है, बट आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है. तो पहले हम बोलेंगे, तो पहले और इधर से बात करना, फिर ज़्यादा इधर से देता है. I want a simple draggable div on current DOM. ठीक है, please use Chrome MCP to analyze the DOM. देखिए मैं उसे क्या करवा रहा हूँ, उससे मैं ये करवा रहा हूँ कि तो पहले समझ लिया अभी क्या है ब्राउजर में. ठीक है, उससे उसको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट लगेगा. अभी अगर 10 वर्ड्स मेरे साथ है तो चल जाएगा. तो बेसिकली ये जो ब्राउज़र चालू है, आप यहाँ पे देखोगे एक्सटेंशन चालू है. ये बेसिकली क्रोम एमसीपी का एक्सटेंशन है. तो ये ओपन सोर्स है, कोई भी ले सकता है. मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे दूँगा. नाइस. तो उसने अभी समझ लिया क्या है. अभी वो सिंपल एक डिव डाल रहा है. अभी वो क्या करेगा, बेसिकली कुछ नहीं कर रहा. जो आपका कंसोल है, ठीक है, सिंपल है, लुक्स नथिंग लाइक जो मैंने स्लैक में दिखाया था. बट अभी अपन इसको और आगे के लेके जाएंगे. ठीक है, तो अभी अपन बोलेंगे टाइपोज. हाँ, क्लाउड के साथ आपको बहुत मजा आता है. आपको टाइपोज की फिगर नहीं करनी पड़ती, फरी सर्च लगा हुआ है तो वो कर लेगा जो करना. आप लेट्स, अभी वो ब्राउजर में कोड है. अभी मेरे को ये कोड एंगुलर में चल रहा है राइट. मेरे को एंगुलर में वो कंपोनेंट लाना है. बट अभी क्या होता है, जनरली मैं क्या करता, पहले अगर करता तो पहले मैं सोचता कि कोड कहाँ है, मैं जाके कंपोनेंट बनाता, फिर ब्राउजर वो एंगुलर लोड मारता.
लोड मारने में उसको 10 घंटे लगता है, मेरे को इतना टाइम नहीं होता, और फिर मैं देखता हूँ फिर यूज़ करता हूँ। उल्टा कोडिंग से उसको ऑलरेडी आइडिया कि क्या करना है आपको हाई लेवल पे। into an angular component, place it in basically ऐप डैशबोर्ड, वो जो अभी डॉम है उसका कंपोनेंट है, तो और दोस्त को पता है, बट मैं एक्सेप्ट करने के लिए ये कर रहा हूँ। डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि ऐसा मैंने जैसे कहा बहुत इनटू होता है इससे, तो वो सोचता है मैं और क्या करूँ, ये नहीं करना है, ठीक है, खत्म, ठीक है। अभी वेट करना है, गाना वगैरह सुन सकते हो, इंस्टा स्क्रॉल कर सकते हो। एक जो कोडर से गलती ये होती है कि वो सबको एंटर दबा देते हैं कि नहीं पढ़ना कोड, बट वो सबसे बड़ी गलती है, वो मत करो। एंटर अभी 10 मिनट बना लोगे, फिर 10 घंटे डिबग करते बैठोगे, तो वो नहीं करना है। ऑलवेज रिव्यू योर कोड, ऑलवेज रिव्यू लाइन बाय लाइन। अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ। दोनों स्कूल ऑफ थॉट है, सर भी कहते हैं कोड पढ़ो मत, आज अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ते हो कोड, पढ़ना तो पड़ता ही है थोड़ा तो इसका फायदा बहुत अच्छा ये हो जाता है क्योंकि यूजुअली सो दिस वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज काइंड ऑफ वर्किंग विद, ये हमें लास्ट वीक ही पता चला कि ये भी अच्छा तरीका है। इसके पहले हम ऑल्दो प्लेराइट यूज कर रहे थे, बट जो टिपिकली प्रॉब्लम क्लाउड में मुझे ये हो जाती थी कि कोड तो उसने जनरेट कर लिया, बट इट इज नॉट एबल टू विजुअलाइज और रेंडर और इवन सी द डॉम स्ट्रक्चर। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई वुड, अगर उसने कुछ तो डॉम में गलती की है या नेटवर्क लॉग्स नहीं है उसके पास एक्सेस, या कंसोल लॉग का एक्सेस नहीं है, एंड इफ आई वांट टू गिव दैट कॉन्टेक्स्ट टू इट, तो मेरे को बहुत मेहनत करनी, मैनुअली मुझे कंसोल लॉग कॉपी करके इधर डालना पड़ता था कि ले भाई डिबग लॉग डिबग कर बता क्या प्रॉब्लम है, या डॉम स्ट्रक्चर मुझे बताना पड़ रहा है। तो दिस प्लगइन रियली हेल्प्स अ लॉट कि फिर वो खुद से ही वो पूरा फुल फ्लेजेड जो पूरा वर्कफ्लो है कि वो खुद ही रेंडर करता है, समझता है इशू क्या है, एंड फिर वो फिक्स कर देता है। इट्स वेरी पावरफुल बिकॉज नाउ इट कंप्लीटली रिमूव्स द एंटायर मैनुअल इंटरवेंशन वाला जो रिक्वायरमेंट है, वो खुद से एजेंटिक तरीके से पूरा साइकिल कंप्लीट कर पाता है। ऑल्सो लाइक इस अप्रोच में व्हाट एक और एडवांटेजेस की ऐसे थोड़े वी आर कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स जब जनरेट कर रहे हो, देयर इज लॉट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट विद अदर थिंग्स। जैसे अभी जो सौरभ ने दिखाया दैट ड्रैगेबल जो उसने विजेट बनाया है उसमें एक वीडियो आनी है, नाउ दैट वीडियो यू डोंट वांट कि वो दूसरे वीडियो पे ओवरलैप करे या ऐसी चीजें। ये सारा इंटरैक्शन सीधा जो ब्राउजर में वो जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर रहा है उसी में यू कैन फाइनलाइज ऑल ऑफ इट विद एआई बाय गिविंग इट फीडबैक एंड उसमें इटरेट करके, so that now AI knows exactly what behavior is expected. Now it is easy for it to replicate that and make an angular component. But वो चीज iterate करना है angular component, फिर वो बार-बार build होगा and for it, and it is never able to get that context कि actually वो गलत क्या कर रहा है, because now with Chrome MCP वो screenshot देख सकता है, DOM देख सकता है, तो वो सारे iterations are becoming much faster. So this is kind of that power as well. एक और गलती जो डेवलपर्स करते हैं उसको सीधा बोल देते हैं मेरे को ऐसा चाहिए, डाल दे कहीं, तो मतलब कैसे काम करेगा, उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। उल्टा कराओगे उसको सब पता है कि ये हायरार्की है, ये डाउन है, तो आप इजीली वहाँ पे बस इंसर्ट कर सकते हो। जनरली डेवलपमेंट कैसे होता था कि अभी मान लो मेरे पास SRE है, बोले भाई फटाक से वीडियो फिट डाल दे, तो मैं पहले क्या कर रहा था, मैं जाऊँगा कोड में देखूंगा, क्योंकि चलो मेरे को तो रेपो का एक्सपीरियंस है, बट मैं गया फिर मैं सोचूंगा अरे ये यहाँ होगा। आप मेरे को तो ड्रैगेबल में आप कोड देखोगे इसका तो बहुत कुछ होता है, इवेंट लिस्निंग है, पोजीशन अपडेट है, एनिमेशन है वगैरह वगैरह, तो ये सब मैं सोचता बैठता, फिर 4 घंटे निकल जाते हैं। फिर हमारा रेपो बहुत बड़ा है तो कोड बिल्ड होने में टाइम लगता है, मतलब कुछ भी चेंज करोगे 10 सेकंड लगता है। अभी वही इरिटेटिंग एक्सपीरियंस है, ये सब करके फिर कभी तो जाके मेरे को फाइनली यहाँ पे ड्रैग अराउंड दिखता नहीं दिखता, आई डोंट नो। फिर मैं क्या करता, क्रोम का इंस्पेक्शन पैनल खोलता, मैं मैनुअली जाके मैं ढूंढता कि कहाँ है, क्यों नहीं चल रहा, साइकिल है पूरा। उल्टा करोगे उसको ऑलरेडी सब पता है कहाँ कोड डालना है, क्या डालना है। अब ये बहुत गंदा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है जो मेरे को चाहिए, बट एटलीस्ट एक बेसिक स्कैफोल्ड उसके पास पड़ा हुआ है। अभी उल्टा क्या करेगा, अच्छा मेरे को अभी कोड पता है कहाँ डालना है, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, बस मैं इसको एंगुलर में या रिएक्ट में व्यू में जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उल्टा कोडिंग कर देगा। ये कुछ टर्म नहीं है, ये मैंने निकाला है। तो इवन मतलब इसमें प्राइमरी कॉन्सेप्ट वही है कि जब आप एक्चुअली इतने बड़े कोड बेस के साथ काम कर रहे हो फॉर सच अ लाइक स्मॉल कंपोनेंट दैट यू हैव टू ऐड, नाउ देयर आर लॉट ऑफ रिस्क्स। वो एआई ने कुछ डाला, अभी बिल्ड क्रैश करने लग गया, नाउ
now you are not spending time on building that component, अब build fix कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो अभी ये कहीं तो because it is messing around या it is editing your code base. There are a lot of other things that can fail जिसकी वजह से time takes longer. With this approach, you are not editing the code base. That मतलब वो जो पीछे जो app है वो वही है. AI has just injected the component that it needs to do directly into the DOM. और वहाँ पे you are iterating, finalizing everything. With that, AI is also learning about your structure. आपका DOM structure कैसा है? With that, it is able to then map to कि ठीक है आपके code में कैसा structure होगा. So it is easier for it once it has done that POC to shift it to Angular or React. That is more or less very quickly and बहुत अच्छे से वो कर लेता है. तो मैं बस आगे बढ़ा रहा हूँ. तो अभी मैंने उसको बोला div तो बना लिया, अभी कुछ नहीं करना, बस वीडियो कंपोनेंट जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बना हुआ है उसको डालना है. अभी वो क्या ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा कि मैं इसको अच्छा बना देता हूँ, दुनिया का बेस्ट वीडियो बना देता हूँ. बोलना है नहीं भाई बेसिक चाहिए, स्टेप बाय स्टेप. तो मैं अभी इसको बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि ज़्यादा उछलना नहीं है, जो भी है डमी डेटा से उसका डमी डेटा से पहले मेरे को दिखा कैसे दिख रहा है, फिर हम धीरे धीरे आइटरेट करेंगे. और उसको बोलूँगा कि अरे भाई तो हिंदी में भी बात कर सकते हो, समझ लो. वही बोला जो आपको बोला, तो आप वो करें. इग्नोर द टाइप ऑफ, मैं ऐसे बात करता हूँ. चलो घुसा दिया अभी वो, सॉरी इंजेक्ट कर दिया अभी. कुछ सोचा with respect to this use case, what is difference between Playwright and Chrome MCQ? Like उसका use case same ही चीज करता है शायद वो. हाँ, बट प्लेराइट लास्ट थर्सडे तक बहुत अच्छा था, ये मेरे को फ्राइडे को मिला तो ये और अच्छा है, तो उसको डन कर. मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है. आप प्लेराइट यूज़ करोगे वो क्रोमियम स्पॉन करता है. क्रोमियम इज लाइक सेपरेट ब्राउजर होता है, वो स्पॉन करेगा, उसमें आपको ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा, उसको लॉगिन करवाना पड़ेगा. एक बार ब्राउजर क्लोज कर देते हो वो सेशन भूल जाएगा, वापस लॉगिन करना पड़ेगा, ये सब. एंड क्योंकि आई डोंट नो क्या उसके पीछे टेक्निकलिटीज है, बट वो कंसोल लॉग फेच करने में, बेसिक डॉम मैनिपुलेशन में बहुत टाइम लेता है. इतना टाइम नहीं है मेरे पास. एंड वो ब्राउजर का रेजोल्यूशन भी बहुत छोटा मोटा कुछ तो कर देता है. हेंस अगर मैं उसको स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट वगैरह देता हूँ तो वो पकड़ नहीं पाता, क्योंकि रेजोल्यूशन छोटा दिख रहा है, तो वो कभी कभी झूठ बोल देता है कि हाँ हो गया, सब सही चल रहा है. क्रोम एमसीपी में क्या होता है, आपका जो डिफॉल्ट क्रोम है, जैसे यानी कि इसका डिफॉल्ट ब्राउजर चल रहा है, ठीक है, तो इसमें उसका ऑलरेडी लॉगिन पड़ा हुआ है, तो आप एंड सबसे खतरनाक जो चीज़ है, बहुत जल्दी कंसोल फेच करता है, बहुत जल्दी डॉम मैनिपुलेशन करता है. ओनली डिफरेंस इज स्पीड. तो क्रोम एमसीपी में क्रेडेंशियल देने पड़ते हैं लॉगिन के. कुछ नहीं वो करना. सेम ब्राउजर का सेशन रीयूज कर लेता है, जिसमें क्रेडेंशियल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो बेसिकली ये जो क्रोम चल रहा है ना, उसमें आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है. क्रोम एमसीपी का एक ब्राउजर एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है. दैट्स हाउ द एमसीपी एंड दिस ब्राउजर इज एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है, देयर आर सम इंपोर्ट इश्यूज, मैं फिक्स करने बैठूंगा, बट यू गेट द जिस्ट. वो अगर मैं सब सही से हो जाएगा तो सीधा आई हैव व्हाट आई वांटेड, जो मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया था. एंड वो स्क्रीनशॉट भी मैंने लिटरली उधर बैठ के बनाया, मतलब ये किया था. तो मतलब आप ये ऐसे जितना जैम करोगे, वो करोगे, जितना छोटा छोटा उसको गाइड करोगे, एंड अगर आपके पास एडेड डॉक्यूमेंटेशन पावर है तो बहुत सही टूल है. एंड प्लीज उल्टा कोडिंग ट्राई करके हमको बताना कैसे. ठीक है. और दो तीन से बता देता हूँ, मौका मिला. Thank you, Saurabh. So, ठीक है, I think we shot over time. So, thank you everybody for being here. I hope this was useful. And if you think there is something useful here, please go and share. I hope all of you are already on AI Flightbase वाले WhatsApp group पे हो. You get okay, yeah, okay. Yeah. So if you are not on the group, you can scan to join the WhatsApp group. We also post the recorded sessions on YouTube, so you can check that out. And on that note, if you really like the session, then please help us spread the word. You can post about it in your community channels, LinkedIn. It will really help us grow the community.